Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, lot of videos on various topics on banking is available on this channel. I have placed the playlist link in the description box and comment. You can watch those videos. Now, one of the question asked by you is what are the challenges or adversities faced by banking industry in present scenario. So we will discuss a few. There are many challenges. We will cover more challenges in coming days. So one of the biggest challenges low deposit growth as compared to high credit growth. So this has resulted into shrinkage of available funds with the bank, and ultimately this is pushing the cost of funds. So the cost at which now banks are raising money is increasing day after day, month after month. So this is one challenge before the banking industry, how to mobilize more deposits. Because credit, they want to continue with higher credit growth because that adds to their profitability. So the challenge is mobilization of funds. This is one, we can say, challenge before the banking industry. Second is liquidity deficit. At present, banks are running short of funds and they are heavily dependent on RBI. Around 2.5 lakh crore they have borrowed as on date from RBI, and this borrowing level is continuing at the same level, and sometimes there is a dip, but again it is showing a rising trend. So this is another challenge before the banking industry, how to again become surplus. Because it is always advisable that bank manages their affair from their own resources. That is basically from deposit mobilization and the other sources. Then digital frauds. With more and more digital transactions happening in banking industry, this has also resulted into higher level of frauds that is being committed on digital platforms. And this ultimately leads to higher cost for the banks. And this higher cost come on two counts. One is they have to upgrade their technology time and again. This involves huge cost. Second is whenever there is a fraud, they have to provide 100%. So the provision amount is also rising on account of digital fraud. Earlier banks were making higher provisions on account of NPAs. Now NPAs are somehow on a comfort zone, but this digital frauds is affecting the banking industry. And the recent example is UCO Bank, where some fraud in IMPS has resulted into heavy provision by the banks, and they have shown lower profit as compared to corresponding quarter. So the digital frauds is one of the area where banks have to work very carefully, and this is becoming a challenge because more and more customers are now using digital platform, and sometimes the shrewd persons are able to defraud the banks as well as customers. So these are some of the challenges. The banks have to educate the customers. Bank has to take care that their customers are not cheated by such people. These type of challenges are there, but more or less banking industry is now in a comfort zone because NPAs are now manageable and profitability is also showing uptrend. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. इस चैनल पे बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स की बहुत सारी वीडियोस हैं. उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट कॉलम में दे दिया, उनको आप देख सकते हैं. आप में से एक प्रश्न पूछा गया कि आज के अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री के सामने क्या चैलेंज है और क्या एडवर्सिटीज़ हैं. तो ये हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहला जो चैलेंज सामने आ रहा है वो है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ रेट है वो लोअर है क्रेडिट ग्रोथ रेट से. लोन्स की जो ग्रोथ रेट है वो हायर है और डिपॉजिट की ग्रोथ रेट लोअर है. उससे क्या हुआ है कि बैंक्स के जो फंड्स हैं, जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हैं वो कम हो गए हैं और उनको हैवीली डिपेंडेंट होना पड़ रहा है आरबीआई
के ऊपर और जहाँ से वो इसको बारो कर रहे हैं। अच्छी सिचुएशन वो होती है जब बैंक्स के पास जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन भी अच्छा हो और क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी हो, क्योंकि क्रेडिट को तो हमेशा बैंक देना चाहते हैं क्योंकि वहाँ से ब्याज आना है, वो इनकम आनी है। पर क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ हायर नहीं है तो उसकी वजह से बैंकों को हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर करने पड़ रहे हैं, जिससे जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं, जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है, वो निरंतर बढ़ती जा रही है। और उसके बढ़ने से जो मार्जिन्स हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आने वाले दिनों में डिपॉजिट मोबिलाइजेशन कैसे बढ़ाई जाए, और ये एक चैलेंज बैंकिंग इंडस्ट्री के सामने निकल के आ रहा है, क्योंकि काफ़ी सालों से निरंतर बैंक्स के पास सरप्लस फंड्स थे। इस साल में ही ये शॉर्टेज ऑफ फंड्स स्टार्ट हुआ है, और ये जो साल चल रहा है ये चैलेंजिंग ईयर बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के एंगल से हो सकता है। तो जो लिक्विडिटी डिफिशिट है, ये सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज है जिसके ऊपर सभी बैंक काफ़ी फोकस किए हुए हैं, और अभी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर इस चैलेंज को मीट किया जा रहा है। इसके अलावा डिजिटल फ्रॉड्स, जैसे जैसे डिजिटल पेनिट्रेशन कंट्री में बढ़ती जा रही है, यूसेज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ता जा रहा है, उसी रेशो में डिजिटल फ्रॉड्स भी बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो डिजिटल फ्रॉड्स हैं, ये बैंकों के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि एक तरफ बार बार अपनी टेक्नोलॉजी को बैंक को अपग्रेड करना पड़ता है ताकि इस तरह के फ्रॉड से बचा जा सके, वहाँ पर कॉस्ट इन्वॉल्व है। और जहाँ जहाँ ये फ्रॉड हो जाता है तो फ्रॉड अकाउंट के अंदर बैंक्स को 100% प्रोविज़न करना पड़ता है, जो अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी को एडवर्सली इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए बैंक्स कोशिश करते हैं अपने कस्टमर्स को एजुकेट करने की, कस्टमर्स को समझाने की, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को और ज़्यादा सिक्योर करने की। मगर अभी ये चैलेंज बना हुआ है क्योंकि काफ़ी लोग इतने टेक्नो सेवी नहीं हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी फ्रॉड्स निकल के आ रहे हैं, और सिस्टम्स के अंदर कहीं ना कहीं कमी ढूंढ के जो लोग फ्रॉड करते हैं वो उसको अलग अलग तरीके से अंजाम दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, कैसे इसको मिनिमम किया जाए। हालांकि जो पहले चैलेंज था एनपीए का, वहाँ पर काफ़ी सुधार आ गया, एनपीए अब काफ़ी मैनेजेबल लेवल पे आ चुके हैं। मगर ये डिजिटल फ्रॉड्स की वजह से जो प्रोविज़न डालनी पड़ रही है, ये बैंकों के लिए एक एडवर्सिटी है। और जो कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रहे हैं वो तो एक एडवर्सिटी है ही, मगर सिल्वर लाइनिंग भी है बैंकिंग के अंदर कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है सभी बैंक्स की। और उसका मुख्य कारण ये है कि जो एनपीएज हैं, चाहे प्रोविज़न डाल के वो कम हो गए हैं, चाहे रिकवरी से कम हो गए हैं, अब काफ़ी कंफर्टेबल जोन में बैंक्स के एनपीए आ चुके हैं। मगर ये जो अभी जो बातें मैंने डिस्कस की है वो अभी भी चैलेंज बने हुए हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।